Hi guys, a very good morning to all of you. I'm Saba, your English faculty at Oliveboard. I welcome you all on the official YouTube channel of Oliveboard. So just confirm me once if I'm audible and visible to you all. एक बार मुझे बता दीजिए क्या सभी लोगों के लिए मैं लाइव हो चुकी हूँ? Am I audible and visible to you all? So basically, this is a descriptive session. I don't know why thumbnail was going like that. Okay. So this is a descriptive session and it is going to help you a lot. Okay. Because this is going to be a complete session. Uh, So this is going to be a complete session. So where I will be discussing letter, essay, format, one sample letter, one sample essay, everything we will be discussing. Okay. So quickly join in the session. Share this session with others also so that others can also join. So all the minutes, all the things that you have to keep in mind while attempting because descriptive can play a very, very important role. देखिए ऑब्जेक्टिव एक ऐसी चीज होती है जिसकी प्रिपरेशन आप काफी दिनों से करते हैं ओके so the moment you start your preparation, you start preparing for pre, mains, different subjects. But descriptive is something that after school time, I don't think that unless you had any particular examination where descriptive was asked. So no one takes this, okay? कोई भी इसकी practice नहीं करता. And this descriptive can play a very, very important role. If you know how to write, especially letter can be very scoring for you, okay? So essay, if you know the points, if you know how to write, so definitely you can write, okay? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके लिए आपको थोड़े से मेहनत में अगर आप थोड़ा सा भी इस पे एफर्ट डाल देते हैं तो यू कैन स्कोर वेल एंड इट कैन गिव यू मैक्सिमम मार्क इट कैन चेंज योर ओवरऑल स्कोर इट कैन गिव लीड यू टुवर्ड्स सिलेक्शन ओके so don't take it lightly take this descriptive paper also very very seriously okay so let us start this session so please do not underestimate its role in the selection so it is going to play a very very important role in your selection descriptive paper. A very good morning to all of you. So now I will start with letter. Okay, I will discuss everything, the format, the correct way, and how to secure maximum marks in descriptive. कि कम मेहनत करके भी किन किन चीजों पे basically focus करके you can score maximum marks in descriptive paper. So everything I'm going to discuss today. Okay. So before starting, as I always say, guys, please like this session. एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए सब लोग. Share this session and subscribe to the YT channel. Okay? जो भी लोग नए आए हैं, first time इस सेशन को देख रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. Okay? Share this session with others because when I was sharing, so I don't know how it was going. Some other thumbnail was showing कि SBI clerk वगैरह का कुछ शो कर रहा था. So please share this session in all your respective telegrams, WhatsApp groups, whatever you have. Okay? So because so that other students can also join. Descriptive can be a challenge for many students. Okay? एंड इफ यू हैव नॉट डाउनलोडेड अवर ऑलीबोर्ड आप जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है प्लीज डाउनलोड इट यस मैम फर्स्ट टाइम ओके सो यू नीड टू वर्क ओके कुछ चीजों को माइंड में रख करके यू कैन इजिली स्कोर इन दिस सो आई होप पैटर्न में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यू नो कि यू विल बी गेटिंग 30 मिनट्स ओके सो इन 30 मिनट्स यू हैव टू अटेम्प्ट बोथ दिस क्वेश्चंस लेटर एंड एसे सो 30 मिनट्स में आपको दोनों चीजें अटेम्प्ट करनी है मार्किंग इज 25 मार्क्स ओके सो 15 मार्क्स फॉर एसे एंड 10 मार्क्स फॉर लेटर so first of all your aim should be to score at least 8 to 9 marks in letter and securing 8 to 9 marks in letter is very very easy क्लर्क का डाला नहीं है वो क्लर्क का लिंक आ रहा है मैंने डाला इसी का लिंक था आई डोंट नो व्हाई थंबनेल इज शोइंग फॉर दैट तो वो माइट भी कुछ ऐसा इशू चेंज वगैरह हुआ होगा तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज ओके सो दैट इज आई एम सेइंग यू कि एक बार आप लोग फिर से शेयर कर दीजिए माइट भी आपसे सही चला जाए तो शेयर दिस इन ऑल योर डिस्क्रिप्टिव लेसन ओके डिस्क्रिप्टिव सेशंस सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी माइन्यूट्स ऑफ लेटर राइटिंग बिकॉज सबसे पहले जो आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एंड सबसे पहले अगर आपको एग्जाम में कुछ अटेम्प्ट करना है तो दैट इज योर लेटर सो लेटर यू कैन ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 8 to 9 मार्क्स एवरीथिंग आई विल टेल यू ओके एंड टुडे आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस जैसे कुछ लेटर होता है जो आपने काफी प्रैक्टिस किया होता है टुडे आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस अ डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो कि लेटर की जो वर्ड लिमिट होती है वो 150 वर्ड्स होती है अप्रोक्सीमेटली ओके सो अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स इज द वर्ड लिमिट ऑफ लेटर राइटिंग अब 150 वर्ड्स ये आपका एड्रेस से ही स्टार्ट हो जाता है एज द स्टूडेंट्स हैव टोल्ड ओके तो वहीं से आपका जैसे ही आप सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं वहां से वर्ड लिमिट स्टार्ट हो जाता है बट स्टिल यू हैव टू बी विजिलेंट कि यू हैव टू बी विजिलेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कि आपका वर्ड काउंट लेटर का कहां से स्टार्ट हो रहा है
अगर वो एड्रेस से स्टार्ट होता है, इट मींस दोस 150 वर्ड्स विल बी इंक्लूडिंग एड्रेस, सेंडर्स, रिसीवर्स, सब्जेक्ट, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दैट. ओके. द नेक्स्ट, द फॉर्मेट शुड बी करेक्ट. देखिए सबसे पहले लेटर का होता है कि अगर आपने सही फॉर्मेट लिखा है तो यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स इन फॉर्मेट ओनली. मैक्सिमम मार्क्स यू कैन गेट इन फॉर्मेट ओनली, बिकॉज बॉडी में कुछ लिमिटेड चीजें ही लिखनी होती है, स्पेशली फॉर्मल लेटर में. यू नो फॉर्मल लेटर की बॉडी बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होती. यू हैव टू बी टू द पॉइंट. ओके, इट शुड बी वेरी, यू कैन से ब्रीफ, कंसाइज होती है. So you have to follow the correct format for both formal and informal letter. So maximum marks you can get on format itself. Then there should not be any grammatical and spelling mistakes. The maximum focus should be on grammatical and spelling mistakes. Now, it doesn't mean that you have to write very complicated sentences or you have to use very tough words. सिंपल सिंपल ग्रामर का यूज करिए, सिंपल वोकैब जिनकी स्पेलिंग्स आपको पता होती हैं. So definitely use all these things. Okay, so please focus, because automated correction में सबसे पहले आपकी grammatical और spelling mistakes ही check होती हैं. So your sentence formation should be correct. There should not be any grammatical or spelling mistakes. Focus on this. Punctuation, if you are following punctuation, so yes, you have to follow it everywhere. But that won't be counted in word limit. Okay, punctuation is not counted in word limit. Do not write letter in points. सबसे important point. Letter is always written in paragraph. Okay, it should not be written in point. You cannot give pointers or bullet points in letter. तो लेटर में आप कभी भी बुलेट पॉइंट्स या पॉइंटर्स नहीं दे सकते हैं. इट शुड बी रिटन इन पैराग्राफ. क्लियर? एंड आइडियली द पैराग्राफ शुड बी 3. नाउ 3 पैराग्राफ डजंट मीन कि वो 3 पैराग्राफ्स आपके बहुत लेंथी होने चाहिए. सो आइडियली जो फॉर्मल लेटर का जो होता है वो बेसिकली 3 पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. And it is for any letter. Basically, we have 3 paragraphs: introduction, body, and conclusion. Now, you can simply write one line for introduction. Now, it doesn't mean कि introduction है तो वहां पर आपको 3-4 sentences you have to write. Simply one line you can write for introduction. Then body, at least 3-4 sentences you can write for the main body, and conclusion you can write 1 to 2 sentences. Simple. This is the thing that you have to write. अलग से कीवर्ड, कीबोर्ड, यस अलग से लगेगा, नॉट कीबोर्ड ऑफ लैपटॉप. यू हैव टू प्रैक्टिस यूजिंग अटैचिंग वन कीबोर्ड. वो कंप्यूटर का कीबोर्ड होगा, वो लैपटॉप का कीबोर्ड नहीं होगा. सो प्रैक्टिस के लिए प्लीज अटैच वन कीबोर्ड, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस. यू विल नोट द डिफरेंस इन टाइपिंग ऑन कीबोर्ड ऑफ दिस लैपटॉप एंड दैट कंप्यूटर कीबोर्ड. ओके, so purchase one keyboard and attach it in your laptop and practice using that. Okay, yes. So is this point clear? Ideally you have to follow 3 paragraphs in letter. Okay, next. Main body must be written in just a single paragraph. Sorry, what I have written once. 3 to 4 lines I have written. It is not 3 to 4 paragraphs. So for main body, you cannot use multiple paragraphs. Main body के लिए आप बहुत सारे paragraph नहीं use कर सकते हैं. Whatever you have to write in main body, just try to write in single paragraph. Okay. So because then only there will be ideally 3 paragraphs: introduction, body, and conclusion. The next point is avoid using slang, idioms, and abbreviation. So avoid using idioms and all these things, because idioms and all we use these things in letter. इन सारी चीजों का यूज हम लोग लेटर में करते हैं. Abbreviation जैसे बैंक को आता है तो you people write SBI, you people write UBI. So try avoid using these abbreviations. जैसे as soon as possible को आप लोग ASAP लिख देते हैं. So these are not the formal words. So avoid using these words. यस वो आई डोंट नो वो किस वजह से एसबीआई क्लर्क का मॉक टेस्ट शो हो रहा है. दैट इज आई एम टेलिंग गाइस कि एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए. ओके, yes, I will show you everything. In fact, even one sample letter also I will show you, Suraj. So don't worry. As I told you, this is going to be a complete session. So everything I will be discussing here. That's what you guys have to do. Like this session and share this session. It is going to be a complete session, including everything, both letter and essay, both the formats, formal and informal. Okay. पैराग्राफ आई टोल्ड इंट्रोडक्शन के बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा. देन विल बी बॉडी, देन कंक्लूडिंग. See, the word limit will be mentioned na. It can be 150, it can be 130, it can be 170. So generally it is 150 words. Okay, next. Okay, then very important point. See, what most of the students they are afraid of or what they are concerned about is using very high end language. देखिए मैक्सिमम डाउट यही होता है कि मैम बहुत ही ज्यादा टफ लैंग्वेज यूज करनी होगी. नो,
You have to use easy language, easy word, simple easy word, simple word जो आप डेली यूज में यूज करते हैं. ल्यूसिड लैंग्वेज, कोई भी हाई एंड वर्ड्स, कोई भी ऐसी चीजें जो मीनिंगलेस हो, जो आपको ना समझ में आ रही, डू नॉट यूज. सिंपल सेंटेंसेस लिख करके, बट इट शुड बी ग्रामेटिकली एंड स्पेलिंग वाइज करेक्ट. कि ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, कॉन्टेक्चुअली फिट होना चाहिए, और स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. So if you focus on these things, definitely you will score good marks in letter. आप लेटर में अच्छा मार्क्स, बिकॉज देखिए ये चीजों पे अगर आपने फाइंड मतलब फोकस कर लिया, तो बॉडी में मैक्सिमम चीजें तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाती हैं. ओके, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू गेट फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ, व्हाट यू हैव टू इंक्लूड इन बॉडी. सो आर दिस पॉइंट्स क्लियर? ये जो डिटेल्स है लेटर राइटिंग के, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन, आई होप दीज आर क्लियर. ओके, एनी क्वेश्चन इन दिस? Now I'm going to discuss the format. So first of all, I will discuss the difference between the format of formal and informal letter. Okay, कि क्या क्या difference होता है. कि I told ना 10 marks for letter and 15 marks for essay, Rupal. Now format में as you start with sender's address. Sender's मतलब the person who is writing the letter. अब ये जरूरी नहीं है, बिकॉज आज का जो लेटर आप देखेंगे वहां पे सेंडर ही चेंज होगा. सो ऑलवेज डोंट एज्यूम योर सेल्फ एज सेंटर, बिकॉज जनरली व्हाट हैपेंस, वी एज्यूम अवर सेल्फ एज सेंटर. हम अपने आप को सेंटर एज्यूम कर लेते हैं. यू हैव टू सी कि हु द लेटर, मतलब व्हाट इज द क्वेश्चन, लेटर लिखने के लिए किसको आया, कौन लिख रहा है. सो दैट यू विल गेट टू सी इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. सेंडर एड्रेस का मतलब भेजने वाला, जो भी पर्सन लेटर सेंड कर रहा उसके बारे में आपको उसका एड्रेस लिखना है. ओके, आफ्टर सेंडर्स एड्रेस देयर विल बी डेट. आफ्टर डेट यू विल लाइक, अगर आपको एंटर अलाउ है, नो दिस स्पेस डिपेंड्स अपॉन दैट फंक्शनिंग ऑफ एंटर की. अगर आप एंटर की को 2 बार प्रेस कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे बीच में एक लाइन का स्पेस छोड़ दीजिएगा. ओके, डेट के बाद भी इफ यू आर एबल टू, इफ दैट इज फंक्शनिंग, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक स्पेस छोड़ेंगे. देन यू विल राइट रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर्स मतलब जिसको आप लेटर भेज रहे हैं, जो भेज रहा है सेंडर, जिसे भेजा जा रहा है, दैट इज रिसीवर. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज. बट इफ आई टॉक अबाउट इनफॉर्मल लेटर, अब इनफॉर्मल लेटर में यहाँ पे सिर्फ सेंडर्स एड्रेस होगा, देयर विल नॉट बी एनी रिसीवर्स एड्रेस. सिर्फ भेजने वाले का एड्रेस होता है सेंडर्स एड्रेस. ओके, डेट इज देयर, नो रिसीवर्स एड्रेस वी मेंशन इन इनफॉर्मल लेटर, रिमेंबर दिस थिंग. ओके, देन आफ्टर रिसीवर्स एड्रेस वी जनरली राइट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट देखेंगे आज की डेट में चेंज भी होता है. सब्जेक्ट कैन बी रिटन आफ्टर सैल्यूटेशन एंड बिफोर सैल्यूटेशन आल्सो, बट आइडियली व्हाट यू पीपल आर यूज्ड टू ऑफ राइटिंग, आई एम राइटिंग सब्जेक्ट बिफोर सैल्यूटेशन. सो सब्जेक्ट, देन यू हैव टू राइट सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मींस डियर सर, सिंपली सर और मैम, सिंपली सर और मैम. ओके, बट इनफॉर्मल लेटर में अब ये सारी चीजें एक्सक्लूड हो जाती हैं. आफ्टर डेट डायरेक्टली यू विल राइट सैल्यूटेशन. This is the major difference. Sorry, dear and name you will write. Dear, whatever the name of your sister, जिसको भी लेटर आया है, ठीक है? Because informal letter will be asked to your friends, family, relatives, all these people. Okay, so just write the name. Are these points clear? These two are major differences in the format of informal letter and formal letter. फॉर्मल लेटर में आपको रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट सब कुछ मेंशन करना है, whereas इनफॉर्मल लेटर में आपका सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट मेंशन होगा. Dear can be used in formal also. Dear is nowadays a formal word. Okay, so ये जो आपका डाउट है कि dear cannot be used, dear is an informal word, that is not the correct thing. It is a formal word these days. Clear or no? Now after this, see, अब देखिए जो भी क्वेश्चन होगा, सब्जेक्ट आप कैसे लिखेंगे. नाउ द डाउट इज व्हाट विल बी द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट के लिए कुछ अलग से सोचना नहीं है. वॉट एवर द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन की ही 2-3 लाइन लेकर के यू जस्ट हैव टू मेंशन द सब्जेक्ट. इट माइट बी गिवन, इट माइट नॉट बी गिवन. अगर सेंडर्स एड्रेस दिया है तो आपको वही एड्रेस लिखना है. इफ इट इज नॉट गिवन तो यू हैव टू एज्यूम. ओके, एंड वन मोर थिंग, बैंकिंग में जनरली सेंटर्स एड्रेस नहीं दिया होता है, एसएससी में दिया होता है, बट बैंकिंग में ऑफन इट इज नॉट मेंशन्ड सेंटर्स एड्रेस. क्लियर एवरीवन? सर, मैम, and then dear के साथ you will start. Now the main body should be in 3 paragraphs. One your introduction, then your main body, and then your conclusion. Okay, and after that your closing, that is your thanking you. Do not write thanks. Do not write thanks. Thanking you, yours faithfully, sincerely, whatever you want, and then your name. And if I talk about the format of informal letter, so after dear, name, salutation के बाद you will directly start the body. Okay.
आफ्टर दिस यू विल डायरेक्टली स्टार्ट द बॉडी, ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्ट बॉडी स्टार्ट कर देंगे. After thanking you, can we use comma? No, not comma. If you are using, that is full stop. After thanking you have to use full stop, not comma. Yours faithfully, name. Clear, everyone? Are these points clear? Now here, dear body will come, and here you do not write thanking you. You say lots of love, convey my regards, wish you see you soon. So all these things you write in informal letter, closing lines. Okay. So that is closing statement. See you soon. All these things you write. Okay. So looking forward to hearing from you. ठीक है, आप उनसे भी लेटर लिखवाना चाहते हैं, आप उनके बारे में भी सुनना चाहते हैं. So whatever may be the question based on that, and then simply yours lovingly. Here you will write yours lovingly, not faithfully. सर के यहाँ पर द सर मैम, नो सर, द वी यूज बिफोर डेजिग्नेशन, द का यूज डेजिग्नेशन के पहले होता है, ठीक है. जैसे यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस जब आप लिखेंगे तो वहां पर आप लिखेंगे द दिस मैनेजर, द एडिटर. So before this designation you have to use the, and this the is mandatory. मैंने कुछ कुछ लेटर के करेक्शन किए. देखिए, now when we are taking descriptive back, when we are doing the correction, then we see कि कहाँ कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं. किसी ने डेट ही नहीं लिखा, किसी ने द ओमिट कर दिया, किसी ने सब्जेक्ट ओमिट कर दिया. इनफैक्ट आई हैव सीन सच अ केस जहाँ पे सैल्यूटेशन ही ओमिटेड हो गया था. सो दिस विल हैपन, एंड दिस विल हैपन इन द एग्जामिनेशन आल्सो. अभी आपको यहाँ बैठ के लगता है कि हाँ सब कुछ पता है, बट व्हेन यू आर इन अ हरी, व्हेन यू आर टाइपिंग समथिंग, तो यू डू नॉट इवन नोटिस कि आप किन किन चीजों को ओमिट कर दे रहे हैं, यू आर फॉरगेटिंग समथिंग. सो उस केस में प्रैक्टिस इज द की. यू हैव टू प्रैक्टिस, you have to type the letter, you have to type the essay, and then you have to practice in that way. Then only you will get the accuracy. ऐसे देख के सब्जेक्ट सब कुछ देखना सब कुछ इजी लगता है. अच्छा, यू मीन टू से कि देखिए फॉर्मेट पे और इन सारी चीजों पे, इफ यू वांट कि फॉर्मेट पे कितने मार्क्स मिल जाएंगे, सो आई कैन से कि आउट ऑफ 10 2 to 3 मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट ऑन फॉर्मेट. तो अगर आपने सब्जेक्ट वगैरह सारी चीजें लिखा हुआ है तो यू विल गेट 3 मार्क्स अप्रॉक्स ऑन फॉर्मेट. बॉडी में बाकी की जो चीजें आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एवरीथिंग, पॉइंट, स्टिकिंग टू द टॉपिक, ऑल दीज थिंग्स आर सीन इन द बॉडी. ओके. सब्जेक्ट कैन कम आफ्टर सैल्यूटेशन आल्सो. सब्जेक्ट कैन कम. देखिए इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट होता ही नहीं है, बट यहाँ पर सब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी आफ्टर सैल्यूटेशन भी होती है. इट कैन बी रिटन, बोथ द फॉर्मेट्स आर करेक्ट. ओके. बट यूज द वन दैट यू आर रेगुलरली यूजिंग. एग्जाम में जाके कुछ भी चेंज मत करिएगा. जिस चीज पे आपकी प्रैक्टिस है, इधर यू आर राइटिंग सब्जेक्ट बिफोर द सैल्यूटेशन और आफ्टर द सैल्यूटेशन, प्रैक्टिस दैट वे ओनली. ओके. यस, फॉर्मल लेटर तो आप याद कर सकते हैं. Now I am going to show you one sample, but before sample I want you to practice. ठीक है. The question is, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज इस तरह का लेटर जनरली आपने नहीं लिखा होगा. ठीक है. Write a letter to the customer as a bank manager. Now see the change of situation. Now you are bank manager and you have to write a letter to the customer for recovery of amount wrongly credited to his account. कि मतलब कोई अमाउंट है जो आपकी बैंक की तरफ से किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, आपको उसको लेटर लिखना है. नाउ जस्ट लेट मी नो व्हाट विल बी द सेंटर्स एड्रेस. गाइस फटाफट मुझे बताइए क्या सेंटर्स एड्रेस होगा. नो हेडिंग, नथिंग. सिंपली गिव द ऑप्शन. जैसे आपने वन ऑप्शन लिखा या टू, जो भी चूज किया, एबीसी वॉट एवर इज गिवन, जस्ट मेंशन द ऑप्शन बी एंड स्टार्ट राइटिंग. गुड मॉर्निंग मोनू, गुड मॉर्निंग एवरीवन. Yes. Now, Apurv, you are doing the same mistake. Here, you are not going to write your address. Here, the sender is, who is the sender? The branch manager, the bank manager is the sender. So, you have to write this, the manager, the bank manager. This, now, देखिए अब ये चीजें क्या है ना, ये रिवर्स हो गया. कि अभी तक आपने जितनी भी प्रैक्टिस की होगी, आपने बैंक को लेटर लिखा होगा कि यू आर अ कस्टमर, यू आर राइटिंग अ लेटर टू द बैंक. नाउ हियर एंटायर सिनेरियो इज चेंज. तो अब आपको यहाँ पर लिखना होगा सेंडर्स एड्रेस में बैंक का एड्रेस आएगा. गॉट दिस पॉइंट एवरीवन? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? द बैंक मैनेजर, whatever bank you want to write, Punjab National Bank, Canara Bank, whatever bank you want to write, यहाँ पर do not write abbreviation. पंजाब नेशनल बैंक. अब जिस भी ब्रांच को आप लिख रहे हैं, सपोज आई एम राइटिंग द्वारका न्यू दिल्ली, द्वारका न्यू दिल्ली. ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी योर सेंटर्स एड्रेस, बिकॉज नाउ बैंक इज द सेंटर.
Don't make these mistake because these are the thing. That is why I have chosen this letter. मैंने because आपने as a customer आपने बैंक में बहुत सारे letters की practice की होगी. So this can be just opposite of what you have practiced till now. Okay. So be prepared with any sort of letter that can be asked. ठीक है. किसी भी तरह के letter के साथ ready रहिए जो भी exam में पूछा जा सकता है. Clear everyone? Now, after this, you have to write date. So, simply today is 5th November. So, I will write November 5, 2022. You can write 5th November 2022 also. November 5, 2022. Clear? 5 से 6 हो रहा जेन्युइन सीजल का क्लास कल मैंने लिया था. ठीक है. Now, after this, your receiver's address will come. Now, what are you going to write in receiver's address? अब यहाँ पर आप किसका एड्रेस लिखेंगे? नहीं, बैंक का नाम लिखिए. Do not write ABC in bank. बिकॉज बैंक इतने सारे बैंक है. वाई टू राइट एबीसी बैंक? पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी बैंक लिख दीजिए. वाई टू राइट एबीसी बैंक विद इट? हाँ, it will happen, Bhavani. It will happen. This is what I'm telling you. So this you have to see this space. It might not function in the examination. So you don't have to panic that time. डेट पहले नहीं लिख सकते सेंटर्स के बाद. यही तो फॉर्मेट है उज्जवल जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि आपको जो है फॉर्मेट मेंटेन करना. सेंटर के बाद आपका सेंटर एड्रेस के बाद ही डेट आएगा. कोई फुल स्टॉप नहीं. अगर आप चाहते हैं लगा सकते हैं. दैट इज नॉट मैंडेटरी. ओके. हियर नो नीड. सी अगर अब देखिए पंक्चुएशन से रिलेटेड भी मैं आपको बता दे रही हूँ. अगर आप पंक्चुएशन फॉलो कर रहे हैं आफ्टर द सेंटेंस, जैसे बीच में तो यू हैव टू फॉलो. बट अगर आप फॉलो करें तो आफ्टर ब्रांच मैनेजर इट विल बी कॉमा. पीएनबी के बाद भी कॉमा होगा. न्यू दिल्ली के बाद फुल स्टॉप होगा. ओके. सो इफ यू आर फॉलोइंग पंक्चुएशन सो यू हैव टू फॉलो इट एवरीवेयर. बट इफ यू आर नॉट फॉलोइंग पंक्चुएशन सो ओमिट पंक्चुएशन. बिकॉज आज की डेट में जो अपडेटेड पंक्चुएशन है, so as per that updated format है, उसके अकॉर्डिंग punctuation is not necessary. So but if you want to follow, so after branch manager you have to write comma, PNB के बाद भी comma and New Delhi के बाद full stop. Clear, Arju? Now after this you have to write the customer's address. तो आप किसी भी आप अपने आप को कस्टमर assume कर लीजिए. Just reverse कर दीजिए आप. Now you are the customer, you can assume your address. Okay. So anything I'm writing Nivedita Jain. ठीक है. Nivedita Jain, house number 55, अक्षरधाम कॉलोनी. एनी एड्रेस आई एम राइटिंग. ओके. बस एड्रेस आपके टिप पे होना चाहिए सो दैट आपको वहां पे पढ़ने में टाइम ना लगे. ठीक है. आपको सोचने में टाइम ना लगे. सो एड्रेस शुड बी ऑन योर टिप. बस आप उसको रिवर्स कर सकते हैं अगर इस तरह का लेटर आया है. सो अक्षरधाम कॉलोनी. देन आई कैन राइट न्यू दिल्ली. New Delhi, you can write the pin code also 221002 1110057. Any pin code you can write. So this is this. अच्छा ये तो आपका हो गया. Now what will be the subject? This is all about your address. I will show you the written format also, but I just want to know your opinion, your point. How will you write? What are the things that you will include if you get this letter in the examination? So after this, your subject will come. I'm writing subject here only. So what will be the subject? What is going to be the subject? It is just imaginary name. I don't know any person. There's no person in my contact list. What will be the subject? See here, of course, house number full you cannot write. Abbreviation means PNB में इन सारी चीजों में आप abbreviation नहीं use कर सकते हैं. HN simply you can write house number. आप कभी भी देखेंगे तो वो S5 HN ऐसे ही लिखा होता है. Branch pin code is not required. Yes, very good. So you can write recovery. Simply you can write. देखिए अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यहीं से ये लाइन लीजिए. जिसके बारे में भी लेटर लिखना है, this can be your subject. This can be subject. Okay. Recovery of the amount wrongly credited or regarding recovery of the amount wrongly credited. So simply you can write regarding the recovery of amount wrongly credited. Of the wrongly credited amount. Okay. Whatever is the question about, उसी से line लेकर के you can write the subject. Okay. So regarding the recovery of the wrongly credited amount. Got it? Now what will be the body? Now simply you write sir. Simply आपने सर या मैम. अब जैसे यहाँ पे आपने निवेदिता जैन लिखा है, तो द कस्टमर इज फीमेल. इसको भी ध्यान रखिएगा. आप सर कैसे लिखेंगे? आपने कस्टमर का नाम क्या लिखा है? निवेदिता जैन. तो यू हैव टू बी केयरफुल नाउ कि अब आप निवेदिता जैन को सर नहीं बोलेंगे. यू विल कॉल हर मैम ओनली. यू विल एड्रेस हर मैम ओनली. सो इट डिपेंड्स कि आपने किसका नाम लिखा है.
So but these are the points that you have to focus on, कि ये सारे पॉइंट है, इन सबको आपको फोकस करना होगा. एडवर्टीजमेंट आई एम रिमूविंग, यस, 1 second guys. Okay, ma'am. Now, what will be the beginning line? What will be the intro? How will you start? What will be the beginning? Wrongly credited amount it is. Okay. Just let me know, guys. How will you start this letter? हाँ, dear customer also you can write. Dear ma'am, dear customer. ठीक है, आप मैम सर को अवॉइड करना चाहते हैं तो you can write customer also. अब देखिए अर्णव, जो कस्टमर की स्पेलिंग मिस्टेक आपने यहाँ पे की है ना, वो एग्जाम में नहीं करिएगा. आई नो इट इज टाइपो, आई नो इट इज टाइपो, बट दैट टाइपो शुड नॉट हैपन इन एग्जामिनेशन. Instead of writing I'm from PNB, simply you can write that yes, I want to acknowledge that, yes, all these things you can write, correct. So instead of writing I'm from PNB, you can write I'm the branch manager, bank manager of PNB, this you can write. Or this is to inform you that, simple you can start, this is to inform you that we have, simple, this is simple, keep it very very simple. Okay, so this is to inform you that we have wrongly credited. वी मीन्स देखिए, अब आप पूरे बैंक के बिहाफ पे लिख रहे हैं, तो यू आर नॉट गोइंग टू राइट द सब्जेक्ट एज आई, यू हैव टू यूज द सब्जेक्ट, मतलब आप बैंक के बिहाफ पे एडजस्ट कर रहे हैं. ओके, सो वी हैव रॉन्गली क्रेडिटेड एंड डू नॉट राइट वेग डेटा. तो आप ये नहीं लिख सकते कि वी हैव रॉन्गली क्रेडिटेड सम अमाउंट, you cannot write this. We have wrongly credited some amount, some amount you cannot write. We have wrongly credited rupees 30,000, 50,000, whatever you want to write. Okay, 50,000 in your account, in your account on dash dash dash. That's the 3rd of November you can write. 3rd of November 2022. Okay, so आप ये चीज मेंशन करेंगे. Yes, I'm saddened to inform you that नॉट 2 करोड़, इतना भी वेग आइडिया मत लिख दीजिए कि 10 लाख 20 लाख. एक नॉमिनल अमाउंट लिखिए कि मतलब क्या केयरलेसनेस शो करेगा. हाँ, यस, वेरी गुड पॉइंट आशीष कुमार. ओके, सो इन योर अकाउंट you can mention the account number also here. So yes, please do mention, very important point, I forgot that, I missed that, thank you for reminding. So you have to mention that account number also in bracket only. Okay, okay, we have wrongly credited rupees 50,000, 20,000, 30,000, but do not exceed the lakh. Okay, okay, in your account dash 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 on 3rd of November 2022. Okay, clear everyone? Now after that what you can write? So this is just your introductory paragraph. ये एक सेंटेंस में पूरा आ जाएगा, 1 से 2 सेंटेंस में. So this is what? So 30 crore. This you can mention also. In your account, simply you can write having account number. No, simply you can write in in that bracket that account number. You can mention that. See, if space key, if it is working, then definitely you can give the space. If it is working, then definitely you can give the space. Now, I want to know after this, what are you going to write? ठीक है, amount credit हो गया, गलती से credit हो गया. After that, what you are going to write? So will you write? Okay, please return the amount. That's all. It won't it won't be of 150 words. That you can write account number, all these things. That is a different way. Simply you have to see what I feel कि आप इन सारी चीजों में, जैसे फिर से आप उसको having account number or bearing account number, you can simply save the words from here and you can use those words to write a few more important points. Okay. Yes, as per the rules, this amount, very good, Ketan. So this amount will be recovered from your aforementioned account and credited to the right account. Okay. Kindly look into the problem. How will he look into the problem, Madhurima? Because that account amount is credited from your side. Now, what you can mention is, you can say, when we got to know, when this was brought to our notice, we can write this. When this was brought, do we have a space after this? No. So if we can write, when this was brought to our notice by the concerned person, okay?
So we checked our book and we got to know that कि this amount was uh, uh, withdrawn from your account, कि मतलब आपने उस account amount को withdraw भी कर लिया है, कि you withdrew this amount. Okay, so I know you did this unintentionally only because you were not aware of the wrong credit. So please return that amount, or return that amount to us. We will be highly obliged to you. So all those things you can write. Got it, everyone? See, Bhavani has mentioned a very, very relevant point. Bhavani has mentioned a very relevant point. This is not only your problem, Bhavani. Since the advent of WhatsApp, इन सारी चीजों में WhatsApp होने की वजह से, yes, we are sorry for the inconvenience. Yes, definitely you can write we are sorry for the inconvenience because आपकी गलती की वजह से उनको inconvenience वही हुआ है. देखिए भवानी जो ने पॉइंट मेंशन किया वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग इस तरह के वर्ड्स यूज करने के बहुत हैबिचुअल हो गए. जैसे दा को दा लिख दिया, योर को योर लिख दिया, सी को सी लिख दिया, सी यू सून. हाँ, सो you are used to using these languages. Okay, so please avoid, because ये जो आपकी हैबिट में आ गया है ना वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा. That is why I'm telling you that please type the letter and practice. Letter को type करके practice करिए. So you got all the important points that you can write. आप उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके 3 पैराग्राफ में आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? And then it will be thanking you. हाँ, अच्छा 5 आप तो रख लेंगे ना अनुभव? So this is what the exact format I have given you. पूरा सैंपल मैंने उसी लेटर का आंसर आपको दिया हुआ है. So you can go all these things. प्रूफ नहीं देना होगा क्या? No. What proof will you give? Okay, so this is your sentence address. Everything is proper aligned, so it how it should look like in your exam. Now this space it will vary. देखिए इसके बारे में पैनिक मत करिएगा, हो सकता है वहां पर आपका इंटर की वर्क ना करता हो तो you won't be able to leave this extra space. So even if you are using these extra space, not getting these extra space, so omit that. Okay, it will not create any difference, or it will not, it might look congested to you, but you will get full marks. Clear? Yes, avoid using these all things. लेटर आपको सिर्फ और सिर्फ देखिए 30 मिनट्स टाइम में, जो आपको 30 मिनट्स मिलता है लिखने के लिए, आई विल सजेस्ट कि लेटर आपको 10 से 12 मिनट में लिखना है. 30 मिनट आप लेटर पे दे देंगे तो यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स. So that is what you have to practice. Letter you have to manage letter within 10 to 12 minutes anyhow. So you should practice that way कि आपको 10 से 12 मिनट में आपका लेटर anyhow हो जाए. Yes, it will be better अगर आप 8 से 10. Ideally it should be 8 to 10 minutes only. Ideally it should be 8 to 10 minutes. Okay? 12 तो बहुत ज्यादा हो गया, बिकॉज ऐसे विल टेक टाइम. लेटर में कंटेंट ही कहाँ होता है? फॉर्मेट आपको रट के जाना है, फॉर्मेट आप याद करके जाएंगे, डेफिनेटली यू हैव टू टाइप दैट्स इट. और उसको इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि ऑटोमेटिक आपका हाथ चलने लगे. Yes, 8 to 10 minutes ideally I will also suggest. Now this is what the entire body I have written. So regarding the recovery of rupees 25,000 wrongly credited to your account, this account can vary, बस 25 करोड़ 25 लाख मत लिख दीजिएगा, ठीक है? एक जेन्युइन जो फिगर है, जेन्युइन डेटा लिख दीजिए. आई विल सजेस्ट यू राइट फॉर्मल लेटर. नहीं, कुछ मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, बट आपका टाइम जाएगा. बैक स्पेस वगैरह यूज करने से मार्क्स वोंट बी डिडक्टेड, बट यस आपका टाइम वेस्ट होगा. ओके, so dear sir, subject after this, dear sir, we on the 2nd of November had inadvertently credited a sum of rupees 25,000 to your account dash dash dash, which actually should have gone to another customer's account. If you want, you can avoid this line also. अगर आप word limit save करना चाहते हैं, suppose if it is exceeding. देखिए इसीलिए कहा जाता है कि लेटर आपने 8 मिनट्स में अगर लिख लिया, लास्ट के 2 मिनट आप चेक कर सकते हैं. सपोज योर वर्ड लिमिट इज एक्सीडिंग, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये 150 वर्ड से 155 हो गया, रिमूव दिस सेंटेंस बिकॉज ये अननेसेसरी है. अगर वर्ड लिमिट कम होता है तो आप इसको रहने दीजिए. सो दिस इज हाउ यू कैन डू द फाइनल रिविजन ऑफ द लेटर ऑल्सो. क्लियर एवरीवन? बिकॉज अगर आप इसे नहीं भी लिखते हैं देन ऑल्सो इट विल नॉट मेक डिफरेंस, और अगर लिख देते हैं तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो इट इज जस्ट टू मेंशन योर इम्प्रूव. Very good, Rajan. So if your word speed is good, so of course you have to work on content. Yes, you can write. You can write XXX also. But अगर आप लिख सकते हो तो that is okay. चल सकते हैं, but अगर आप जिस चीजों को avoid कर सकते हैं, and if you can stick to the word limit, I will suggest you do that. Okay. Now, when our attention was drawn to this is the main body. So I have segregated the entire thing कि ये आपका intro part हो गया. Then in one body I have written everything as the main body. ठीक है?
When our attention was drawn to this by the concerned customer, we examined our records and found that you have already withdrawn that amount. देखिए अब प्रॉब्लम कहाँ हो गई कि आपने वो अमाउंट विथड्रॉ कर लिया है. As we must rectify this mistake and credit the sum to the correct account, we request you to deposit the said amount with us without delay. क्या आप वो अमाउंट वो कर दीजिए, डिपॉजिट कर दीजिए. We hope you understand our position in this regard. We are sure you withdrew the amount without the knowledge of the wrong credit into your account. देखिए जब किसी भी चीज को आप सोच के लिखेंगे तो of course you will be writing well. आप उसको ज्यादा अच्छे से सोच के लिख पाएंगे. Spontaneously if you write तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में ना आए. Yes, you can change the sentence, but I will suggest कि अगर आपका सेंटेंस सही है तो do not change it, do not spend too much time. तो चेंज वगैरह करने में आपका टाइम जाएगा. If you have, see, final revision में once you have written essay also, once you have written letter also, if you have spare time, you can go for that, Madhuri. I will not suggest you. Okay. So we are sorry for the mistake on our part and regret the inconvenience that it might cause you. Thanking you, yours faithfully, yours sincerely, whatever you write, that's dash. Okay. Got everyone? Any doubt in this letter? This is the complete format and this is the just reverse of the format that you have been practicing. अभी तक आप एज अ कस्टमर लिखते थे, अब आप एक दो लेटर एज अ बैंक मैनेजर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा. So now can it exceed 150? देखिए 4-5 वर्ड्स ऊपर नीचे चल सकता है, बट आई विल टेल यू कि अगर आप स्टिक हो सकते हैं वर्ड लिमिट पे तो डू स्टिक, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वर्ड लिमिट पे स्टिक करना. ओके, सो इट कैन बी स्कोरिंग इफ यू लिमिट टू स्टिक टू वर्ड लिमिट. नाउ एक्सीड डजंट मीन कि 150 का पूछा गया है एंड यू आर राइटिंग 160 वर्ड्स, तो इतना भी एक्सीड नहीं चल सकता. 2-3 वर्ड्स ऊपर नीचे तो यस इट इज ओके, इट इज मैनेजेबल. See, if it is completed with in 140 words, you can add 1-2 line. कहीं पर भी ऐड कर दीजिए कंक्लूजन में और समथिंग, बिकॉज यहाँ तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं. ठीक है. सो शैल आई प्रोसीड टू एसे, बिकॉज वी हैव 20 minutes. आई विल टेल यू इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एसे ऑल्सो. लेटर तो काफी हो गए हैं, एसे भी देख लेते हैं. Shall I, guys? And today I have a very very good topic for essay. Very important topic for essay I have. Okay. हाँ, तो see guys, you can look at Apu point because all these interface problem you might face while using backspace and all. So that is why I'm telling you कि उन सारी चीजों में आप पैनिक हो जाएंगे उन सारी situations में. मिनिमम कितना होने से होगा, मतलब नहीं समझ में आया आपका क्वेश्चन मुझे बितिप. I didn't get your question. So guys, we have this descriptive batch also. This batch is important. देखिए लेटर के सोर्सेज वगैरह आपको बहुत मिल जाएंगे, बट टू इवेल्युएट योर लेटर, I am personally evaluating everyone's letter. Student, they are writing the letter, they are sending it to me. So I am telling, I am discussing the exact format, the correct letter, even I am discussing in the next session. So evaluation makes this session very, very important, this entire batch. Okay. So personally, I am evaluating the letter of each and every candidate. So please do join this descriptive batch. अगर आप मेरा कोड यूज कर लेंगे तो you will get flat 50% off, 55% off अगर अब, because अभी सेल चल रहा है. So this descriptive paper can be game changer in your selection. Don't take it lightly. Okay. So please focus on this. ठीक है. आप ले सकते हैं जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है. I will suggest you hardly ये 500-600 का पड़ेगा, but this 500-600 can change your entire score. Okay. Yes, of course डिडक्ट होगा और काफी अच्छा खासा मार्क्स डिडक्ट होगा विदित. अच्छे खासे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. So we are also launching SBI PO batch. Okay, it is going to be a practice batch. So पूरी तरह से practice batch होगा. हर topic का topic wise practice we will make you do before SBI PO prelims. Okay. So here also if you use my code Saba, you will get flat 55% off. अभी जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है ले लीजिए, because अभी सेल चल रहा है और अच्छा सेल चल रहा है. Okay. So even I'm taking batch for SSC CGL also. This is also the batch that we have started. You can join this batch also using my code SABA for maximum discount. Okay. ये batch भी आपके लिए काफी important होने वाला, because this year we have around 20,000 vacancies in SSC. So please do join SSC batch also, because SSC के grammar और English में और banking के English में difference होता ही होता है. And if there is anyone fresher who wants to take the entire subscription, you can go for Banking Super Elite, because Banking Super Elite you will get access to all the live classes along with mock test. यहाँ पे classes और mock test दोनों के access आपको मिलेंगे. And in Banking Elite you get access to only and only that mock test. Okay.
So this is the sale. This sale is valid only till tomorrow. So I will suggest you, especially descriptive batch guys, please do purchase. जिन्होंने अभी तक purchase नहीं किया है, use my code SABA and purchase this because it is going to be very very helpful for you all. बहुत ज़्यादा helpful होने वाला है. Okay. So any subscription you can take. Okay. And for descriptive you will get 55% off. 40% off you will get on super elite and elite. सुपर एलीट में आपका इस डिस्क्रिप्टिव इंक्लूड नहीं है. आई होप यू ऑल नो. So super elite will not include your descriptive batch and interview batch. You will have to purchase them separately. So 55% off on SBI batch, descriptive batch, interview batch. You will get flat 55% off if you use my code SABA. Okay. Till 6th November. Only till 6th November. Okay. This offer is valid till 6th November only. Okay. So this is my code. You can use this code for maximum discount on purchasing anything on Oliveboard platform. Okay. And Learn English with Saba is my Telegram channel. So this is the channel Learn English with Saba. You can join this channel for updates on every session and full PDF. See, this interface will change also, Bhavani. It might change in the examination also. It is not necessary the interface they used last year, the same interface they are going to use this year also. Okay. So you have to be prepared for any situation. So keep yourself mentally prepared. Okay. Now essay writing. What are the important points? You know कि essay में देखिए letter और essay में difference कहाँ होता है marking में. Letter you have a fixed format. You can learn that format. You can score a few marks on the format itself. But essay there is no format. So whatever marks are you get on the basis of your content. Okay, your grammar, all these things will matter in essay. Your spellings, everything will matter in essay. Okay. So जनरली यू गेट वर्ड लिमिट ऑफ 250 वर्ड्स. देखिए अगर ऐसे में कभी कभी ऐसे वर्ड लिमिट देता है 200 to 250 वर्ड्स. फ्लेक्सिबल योर essay कैन वेरी बिटवीन 200 to 250 वर्ड्स. अगर उन्होंने रेंज दे दिया, but if the examiner has written 250 words, it means you have to stick to 250 words only. 245 words ऊपर नीचे चलेगा, but you cannot write 270 265 words like that. Okay, so you can have the difference of 4 to 5 words in essay also. So sticking to word limit means you will get maximum marks. The more you stick to the word limit, the more marks you can score in the examination. Is this point clear? ग्रामरली इज ओके, बट ग्रामरली में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सही होता है बट वहां पे गलत दिखाता है. ओके, ग्रामरली इज देयर. एक लिंगो करके भी कोई ऐप है, यू कैन चेक दैट ऑल्सो. ओके, so if you want to show your mistakes, grammatical mistakes, spelling mistakes, you can type on Grammarly. Okay. Acha, one more thing, while practicing, do not set your computer on auto correct mode guys, because auto में क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है. समटाइम्स जैसे ग्रामरली वगैरह में क्या होता है कि दे विल अंडरलाइन दैट वर्ड, कि अगर आपका कुछ चीजें गलत है तो दे विल अंडरलाइन दैट. सो उनके कुछ सजेशंस होते हैं. ऑल द सजेशंस आर नॉट वैलिड. ओके, बट यस जो आपके मेजर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है यू कैन चेक थ्रू ग्रामरली ऑल्सो. Then do not waste time and words both. बिकॉज जैसे एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि मैम टॉपिक का नाम लिखना है. जैसे सपोज आपका टॉपिक आ गया साइबर क्राइम, तो इज इट नेसेसरी टू मेंशन साइबर क्राइम? अब देखिए बैंकिंग में जो टॉपिक होती है ना, दे आर क्वाइट लेंथी. दो दो सेंटेंसेस के टॉपिक नेम होते हैं. सो अगर आप टॉपिक नेम कॉपी करने लग जाएंगे तो इट विल बी वेस्टेज ऑफ योर टाइम ऑल्सो, वेस्टेज ऑफ वर्ड लिमिट ऑल्सो. ओके, तो यू विल लूज द मार्क्स. केतन सिंपल, you will lose the marks. अगर आप 190 words में finish कर रहे, you will lose the marks. Marks will be deducted. So simply you can write the question number. जैसे suppose you have chosen the third topic, C topic. अगर 3 topic है या suppose B 2 ही topic है, तो suppose you have chosen the B topic. So just write B and start writing essay. And the same thing you have to write in letter also. Clear everyone? एक ये भी बहुत बड़ा doubt होता है कि मैम लिखना है या नहीं लिखना है. तो purely no, do not copy the topic name. Simply write the option, the topic which you have chosen, and write the name and start writing. No, it will not be scoring. I will tell you all these points. ये जो आपके points है ना, वो उस पे मैं आ रही हूँ. Sub topics and all these things I will tell you. Then third point is, हाँ ये बहुत important point है. देखिए ये जो generally मैंने analyze किया है students की mistake that I am telling you. जैसे आपके एग्जाम में 2 टॉपिक आई, ठीक है, आपने पहला टॉपिक देखा, you started writing on that.
ठीक है, या दूसरा टॉपिक आपने चूज किया, फिर स्टार्टेड राइटिंग ऑन दैट। 2 लाइन लिखने के बाद यू आर स्ट्रक, कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। Then you are deleting everything, then you are starting writing, you have started writing topic A. Don't do such blunders in the examination. ठीक, देखिए ऐसे के लिए आप जो भी टाइम रखते हैं, जैसे आपका 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स में सपोज मैक्सिमम आपने 10 मिनट्स किसके लिए रखा, लेटर के लिए रखा, आप 15 मिनट रख दीजिए ऐसे के लिए, 15 minutes. The last 5 minutes you can keep for revision. Okay. So this should be your ideal classification of time. Diverse, you can say you can classify your time in this way. Segregate your time. तो 10 मिनट्स आपने लेटर के लिए दे दिया, 15 मिनट्स आपने ऐसे के लिए दे दिया, 5 मिनट्स आपका बाद में रिवीजन हो गया कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह चेक कर लिया। अब ये जो 15 मिनट्स आपने ऐसे के लिए दिया है, 15 मिनट्स, टेक 2 to 3 minutes on thinking about the topic. You can mention a few important points that you are going to mention. कि जैसे कभी-कभी क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बट व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग वी फॉरगेट दैट। सो यू हैव अ रफ पेपर, 2 से 3 मिनट लेकर के आप डेफिनेटली यहाँ पर ले लीजिए। You can write that this 2 to 3 minutes you can take. You can jot down important points, what are you are going to include in your letter. Okay, so this will definitely help you framing the sentences. Do not frame the entire sentence, but just write a few words. This will definitely help you framing the sentence. Okay, so is this point clear? Do not start abruptly writing the topic the moment you get that topic. So instead of saving your time, you will lose your time. आपके माइंड में ये एक मिथ होता है कि इससे आपका टाइम सेव होगा, but rather you are going to lose your time. Clear? Essay we will practice approve. Since you are a paid batch student, you need not worry because all the important points we will definitely cover. I will come to your doubt also, Ankita. I will take your doubt also. Use simple language. Simplicity of the language is very, very important. Do not use very tough words. ठीक है, शशि थरूर बनने की जरूरत नहीं है वहां पर कि एडिटोरियल नहीं लिख रहे हैं कि you have to be editors. Do not use editors word and all. Use very, very simple language. ठीक है. Maintain coherency. The most and the last but the most important point. Coherency means that there should be relation between your introduction and the main body. There should be relation between your main body and conclusion. So everything should be what, everything should be coherent. कि मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी इधर का उधर कैसे भी लिख दिया. तो introduction, main body, then 2-3 paragraph for body, and then your conclusion will come. ठीक है. Now आइडियली द पैराग्राफ शुड बी 4-5. जैसे लेटर में मैंने बोला था आपका तीन पैराग्राफ होगा, बट ऐसे में एटलीस्ट 5 पैराग्राफ तो लिखेंगे ही लिखेंगे. नाउ हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन. अब देखिए इसमें मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता दे रही हूँ. Okay, I have gone into very, very, very detail while explaining each and everything. I don't think after this you should have any doubt, any confusion in your mind. Only what you have to do, you have to start practicing. Okay, बस यही आप कर सकते हैं. Now listen. Ideally, it should be in 4 to 5 paragraphs. What does it mean? First paragraph, you have written introduction. Now, you don't have to mention introduction. पहली चीज, जैसे अभी किसी ने पूछा कि मैम सब हेडिंग दे सकते हैं क्या? No, no, we cannot mention introduction because again, wastage of time, wastage of word limit. Your first paragraph will be introductory paragraph, but you don't have to mention introduction. What myth? I forgot. किसको मैंने myth बोला? I don't remember. Bank examiners, among bank exam takers and mine too, essay and letter is corrected by computer and it only sees grammar mistakes. I won't see what I wrote is relevant to the question. अच्छा, हाँ, एक ये भी आपका doubt. I will consult. I will take your this doubt. It is a myth only, not real. कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ग्रामर पे फोकस करके क्वेश्चन पूछा साइबर क्राइम के बारे में और आप लिख करके आ गए हैं मूवी के बारे में, एक मूवी जो आपने कल रात में देखा था. तो डू यू थिंक यू विल गेट मार्क्स? एज पर यू, जो आप लोगों के माइंड में ये डाउट है कि मैम कंप्यूटर इवेल्युएट करता है तो सिर्फ ग्रामर ही देखेगा, तो इट मींस कि फिर तो टॉपिक को पढ़ना ही नहीं है. कुछ भी सेंटेंस आप करेक्ट सेंटेंस फ्रेम करके लिख के आ जाइए, आप कुछ भी लर्न करके चले जाइए. ऐसे कुछ और ग्लोबल वार्मिंग पे पूछो, आप पोल्यूशन पे लिख के चले आइए. सो इट इज नॉट द थिंग. ऐसे तो हर कोई मार्क्स ले लेगा. सो इट इज नॉट द थिंग. ओके, वो कहीं ना कहीं उनका कुछ सिस्टम होगा. यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट सिस्टम. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फॉलो द राइट अप्रोच. और ये सारी चीजें सुन के फिर आप लोगों का प्रैक्टिस कम हो जाता है. हाँ, जस्ट लाइक ओल्ड ग्रेजुएशन डेज एग्जाम कि वहां पे, यस एग्जैक्टली करेक्ट केतन, कि वी डिड द सेम थिंग कि क्वेश्चन कुछ और पूछा है, लिख के कुछ और चले आए हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस. ओके,
they even though it is automated corrected, but yes, they will have certain things. Okay, they will check each and every point. So ये वाला notion तो mind में रखिएगा भी नहीं. Okay, अच्छा, is this point clear guys? कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई सबकी? आई होप नो कंफ्यूजन एट ऑल. ओके, सो आपको ये वर्ड मेंशन नहीं करना, सिंपली इट विल बी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. एटलीस्ट 4 to 5 sentences you can write. In each paragraph you can write at least 4 to 5 sentences. Okay, then you will have main body. Main body should be in 2 to 3 paragraphs. 2 से 3 बॉडी पैराग्राफ तो आप लिखेंगे ही मेन बॉडी का. And then last will be your conclusion. Okay, so you will not mention conclusion, but yes, your sentences should show that it is a concluding paragraph. Okay. Madhurima, I told you related to space that if it is functioning, give space. If it is not functioning, do not give space. देखिए पैराग्राफ चेंज कैसे पता चल जाता है, I will let you know. इसके भी मैं डिटेल बता दूं पैराग्राफ चेंज के बारे में. Now listen to me. अगर आपने यहाँ से इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ स्टार्ट किया, सपोज यू हैव स्टार्टेड राइटिंग इंट्रोडक्शन. Now here your introduction ends. Of course, you will change the yes, enter button once only works once only. So that is the problem uh, that face in the examination. Now what I'm saying, suppose it ends here. Okay, if this paragraph ends here, so you will start fresh paragraph from here. So this gap will show the paragraph difference. Now in case your paragraph is ending here, suppose कोई ऐसा paragraph हो गया जो बिल्कुल लास्ट में जाके end हो रहा है. So what you can do, and you space key is not functioning. So what can you do in the third paragraph? You can simply leave one space and then you can start the third paragraph. So all these things can work there. Okay, clear everyone? Yes, repetition, you cannot avoid repetition. Also very important point. Thank you Arju for raising a very valid question. Avoid repetition. See, once or twice if you repeat something it will work, but too much repetition or yes but more than that it will not work. Okay, so I hope it is clear to everyone. So main body 2 3 paragraphs, introduction 1 paragraph, okay, 2 to 3, and then conclusion 1 paragraph. You are not going to mention all these things. Your content will show that this is introductory, this is main body, and this is conclusion. Shall I come to the topic? Now, any doubt that you, any question that you have related to this particular topic, essay writing? Okay, essay writing में सबसे ज़्यादा important है, you should have points. If you have points, you can write them. You simply have to organize your points and you can write your essay well. So editorial sessions, all these things जो मैं इतने दिनों से कह रही थी, वो सारी चीजों का usage अब आपको जाके दिखेगा यहाँ पर. जितना भी editorial session आपने किया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे जाके दिखेगा. How good you were at reading newspapers and all. Okay. नॉट इन द होल एसे. जैसे ट्वाइस एंटर, अभी क्या होता है कि जब मैंने इसको लिखा तो एक बार एंटर प्रेस करूंगी तो आई विल कम टू द नेक्स्ट लाइन. नॉट ट्वाइस इफ आई प्रेस एंटर तो आई विल लीव वन स्पेस. सो दैट ट्वाइस एंटर विल नॉट फंक्शन. आई मीन टू से दैट it doesn't mean that entire essay the enter key will function once. See, repetition of words is not counted. Repetition of points, ट्राई टू नोटिस द डिफरेंस. रेपिटेशन ऑफ वर्ड का मतलब ये हो गया कि आपने इज एक बार यूज किया तो दोबारा आप इज यूज नहीं करेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. वर्ड्स विल बी रिपीटेड, योर कंसेप्ट, योर पॉइंट शुड नॉट बी रिपीटेड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट भवानी? कि अगर आपने एक बार इज लिखा एक बार एंड लिखा तो ऑफकोर्स आगे भी आप इन सारे वर्ड्स का यूज करेंगे ही करेंगे. So repetition of word will be there, but repetition of content should not be there. Repetition of point should not be there. Because अगर आप एक ही दो point को घुमा फिरा के बातें करेंगे, तो you won't be able to express yourself much. So always yes. एक बातों का repetition, not repetition of word. Okay. So remember this thing. कि वर्ड तो रिपीट होंगे ही ना, ऐसा तो नहीं कि आप डिक्शनरी दूसरी लेकर के आ जाएंगे. सो वर्ड्स विल बी रिपीटेड, बट यस जो बातें जो आपने थॉट एक्सप्रेस किया, थॉट रेपिटेशन शुड नॉट बी देयर. मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, रेपिटेशन ऑफ थॉट्स, पॉइंट्स, ओके, ऑल दीज थिंग्स शुड नॉट बी देयर. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दीज डेज. ठीक है, और देखिए पहली चीज ऐसे को प्रिपेयर कैसे करेंगे. आई हैव वेरी लिमिटेड टाइम, so I won't be able to give you the entire essay in this time, but yes, important points I will tell you. Yes, future लिख सकते हैं, of course.
अच्छा, व्हाट आई वांटेड टू से, देखिए आप जब भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, it is not possible for you to cover all the topic. So what you can do is you can prepare generic topic. अब जैसे आपने एक टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, फ्रीबी पॉलिटिक्स, ओके, सिंपल जेनरिक टॉपिक आपने कर लिया, फ्रीबी पॉलिटिक्स, ओके। नाउ इन एग्जामिनेशन इट मे बी पॉसिबल द एग्जामिनर कैन आस्क, आर फ्रीबी पॉलिटिक्स, सॉरी, इज फ्रीबी पॉलिटिक्स disadvantageous for economy, disadvantageous for economy, for economy, ठीक है। नो इट कैन बी आस्क्ड, इस तरह से आपका क्वेश्चन हो सकता है, इज फ्री बी अफेक्टिंग द इकोनॉमी, ये हो सकता है डिसएडवांटेजेस की जगह ये पूछ ले, इज फ्री बी अफेक्टिंग द इंडियन इकोनॉमी, अफेक्टिंग अवर इकोनॉमी, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। Yes, you can give your suggestion. Definitely, Madhurima, you can give your suggestion. Yes, I will take one more session where I will give you the complete essay. But what important points I would like to tell you is the few important points. कि whenever you are preparing any this topic, try to prepare a generic topic. जैसे साइबर क्राइम पे एक जनरल टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन कैन बी चेंज, ऐसा नहीं कि एग्जामिनर आपको सीधे साइबर क्राइम दे देगा, कहीं ना कहीं इट विल रिलेट साइबर क्राइम विद बैंक। जैसे इज साइबर क्राइम डिसएडवांटेजेस फॉर बैंक, और इज इट अफेक्टिंग बैंक, या has this like increased these days after pandemic. So इस तरह से they can relate several questions based on cyber crime. So what you have to do is, yes, Arju, of course, 7 to 8 a.m. session editorial is going to help you a lot. If you guys remember, we did several articles on freebie politics. In fact, here you can mention the example of Sri Lanka also. श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, दैट वाज द मेजर रीजन बिहाइंड दिस वॉर, दैट वाज फ्रीबी पॉलिटिक्स। सो ऑल दीज पॉइंट्स यू कैन यूज। अभी मोदी जी ने इसको कितना ज्यादा हाईलाइट किया, अभी रिसेंटली अभी अक्टूबर में वो किसी कैंपेन में गए थे, देयर आल्सो ही हैज हाईलाइटेड फ्रीबी पॉलिटिक्स, ओके। सो you will get so much content on this, but you have to organize your content, कि जब आप कोई भी ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं, try to prepare an essay in around 500 words, क्योंकि अगर अभी आप 500 वर्ड में प्रिपेयर करेंगे तो एग्जाम में ऑटोमेटिक वो 200 से 250 हो जाएगा। आई नो, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट। सो व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग एनी जेनरिक टॉपिक, ट्राई टू प्रिपेयर 500 to 600 वर्ड्स। फ्रीबी मतलब, अब देखिए, फ्रीबी का मतलब अगर नहीं पता तो एग्जाम में आप नहीं लिख सकते। फ्रीबी का मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं, फ्री लैपटॉप बांटते हैं, अभी कुछ जगह पे फ्री स्विमिंग मशीन दिया जा रहा था, सो दैट इज कॉल्ड फ्रीबी पॉलिटिक्स। अब देखिए इसको आप स्टार्ट कैसे करेंगे, how will you start this letter? I will exceed this session, guys. I hope it will not affect you. कुछ important points मैं बता दूं आपको, so that you can start this letter. 5G को future tense में लिख सकते हैं, मतलब हम नहीं समझ पाए कि if that is future, yes, you can write in future. Free cycle, so many things. Okay. देखिए, how to start this letter? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट विथ टेलिंग व्हाट इज फ्रीबी। अभी जैसे किसी ने पूछ लिया कि फ्रीबी होता क्या है, तो सिंपल, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज नहीं करना है। यू कैन से लिटरली, इन लिटरेरी टर्म्स, और लिटरली या सिंपली, फ्री बीज आर, कुछ मत लिखिए, सिंपली यू कैन से फ्री बीज आर थिंग्स दैट आर गिवन फ्री ऑफ चार्ज। पहले आपने लिख दिया कि फ्रीबी होता क्या है, तो मतलब एक आइडिया लग गया कि आपको फ्रीबी के बारे में पता है, ओके। सो फ्रीबी आर थिंग्स दैट आर गिवन फ्री ऑफ चार्ज, ओके, सिंपल। यहाँ पर इसका रोल इंडिया में कैसे हो गया, सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज, डू नॉट टेक द नेम ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे जैसे किसी ने बोला मैम दिल्ली याद आ गया, तो डू नॉट राइट आप गवर्नमेंट या बीजेपी, डू नॉट नेम एनी पॉलिटिकल पार्टीज, ट्राई टू यूज दिस, मतलब कि एक जेनेरिक रेफरेंस ही दीजिएगा, पर्टिकुलर रेफरेंस नहीं दीजिएगा कभी भी लेटर में, ऐसे में, एग्जाम में। पता चला वो उस पार्टी का एंटी हो गया या सपोर्टर हो गया तो उसको बुरा लग जाएगा, कंप्यूटर को भी बुरा लग सकता है, ठीक है। सो सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन अ न्यूट्रल पॉइंट इन योर एसे, बिकॉज जनरली पॉलिटिकल बेस्ड एसे पे आप लोग हो सकता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर आप क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। यू कैन नॉट डू दैट।
Yes, don't mention any particular name, very important point. Okay, maintain a neutral stance. देखिए एक पॉजिटिव नेगेटिव, और जब भी देखिए इस तरह के आर्गुमेंटेटिव एसेज आते हैं कि इस फ्री बी अफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी, वहां पर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पॉजिटिव ऑल्सो, प्रॉस ऑल्सो, कॉन्स ऑल्सो। ठीक है, इसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव होंगे, कॉन्स भी होंगे, एंड कंक्लूजन विल बी बैलेंस। एंड इन एनी आर्गुमेंटेटिव ऐसे कंक्लूजन शुड बी बैलेंस। कंक्लूजन में आप दोनों का बैलेंस देंगे, अपने सजेशन भी दे सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स। क्लियर? So now several political parties, just tell me guys what are the points you can use. Okay, so freebies are things that are given free of charge. Simply you can say several political parties promise offering, yeah, promise offering, they promise to offer, you can say promise to offer free electricity bill. Yeah, yes, Delhi government में सबसे ज्यादा freebies हैं. Free electricity, water supply, gadgets like लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स। ये अरविंद केजरीवाल जी ने, मुलायम सिंह यादव ने बहुत लैपटॉप बांटे थे। नाउ ही इज नो मोर। गैजेट्स लाइक लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स, ठीक है, ये सब भी बांटा जा रहा है। बहुत सारी चीजें। ओके, अ फ्यू एग्जांपल्स यू कैन राइट। ओके, सो phenomena observed almost in every major state. Very good, Keetan. Okay, advantages, disadvantages. See, introduction and conclusion should be balanced. Then in between you will get one paragraph for pros, one paragraph for cons. Okay, so it will balance. से बांटते हैं, इट इज वेरी कॉमन। अभी कहीं पर साड़ी वगैरह बट रही थी, आई गेस ये साउथ के स्टेट में था, स्विंग मशीन भी साउथ में ही दिया गया था, सो इट इज नॉट राइट। Yes, 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 you can write, because during political parties campaign, only during these campaigns only they offer freebies. Okay, all these things you can write. Okay, so a promise to offer free electricity, water supply, gadgets like laptops and smartphones to uh, secure the vote of people, right? We can write this, to secure the vote of people, कि वोट लेने के लिए सब करते हैं। और देखिए ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो गई, ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो गई? दिस हैज बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन, दिस हैज बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन। ऐसे में आप इडियम्स वगैरह यूज कर सकते हैं, कोट्स यूज कर सकते हैं, इफ यू नो। दिस हैज बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। दिस हैज बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन among various political parties, yeah, you can say in the political culture, in the political culture, as रीजन दे सकते हैं various parties, so many examples are there. See what I'm telling you, do not mention any state, do not mention any particular party. Okay, simple आप जो है एक जेनेरिक वे में लिखेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक कि किस स्टेट में बांटा गया था, क्या बांटा गया था वो लिखिए, कौन बांटा, कहाँ बांटा, उससे मतलब नहीं है आपको। ओके, डू नॉट मेक इट, डू नॉट पॉलिटिसाइज योर टॉपिक, सिंपल सी चीज है, आपको एक न्यूट्रल स्टैंड बेयर करना है। एंड द सेम सजेशन आई विल गिव यू फॉर इंटरव्यू ऑल्सो, ठीक है। So remember this thing, do not mention the name of any state. So this has become a bone of contention in the political culture, as various parties, political parties you can write, as various political parties try to outdo each other in order to woo the customers, okay, to gain their votes, all these things, in order to lure the customers, woo the customers to gain their votes, all these things you can write. Now what is the very very important line that we have to mention here? Anyone who can tell me? बिकॉज एक इसके लिए बहुत टर्म यूज हो रहा, बहुत ही ज्यादा कॉमन टर्म, दैट यू हैव टू मेंशन। नो 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 नो, you can write that promising grinders, all these things, but do not mention the name of any state, name of any political party. Yes, Revdi culture. You can mention the statement of our Prime Minister. Very good, Rupal. So you can say that our PM refers this or describes it as Revdi culture, which is very disadvantageous or which is hampering our economic growth. Okay, so you can mention this.
भी उन्होंने इसको रेवड़ी कल्चर ही बोला था, तो यू कैन मेंशन दैट रेवड़ी कल्चर इन ब्रैकेट, ओके। ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इट इज यूफेमिज्म फॉर फ्रीबीज, ओके। सो यू कैन मेंशन सच थिंग्स, ओके। सो दिस विल बी योर इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये एक शॉर्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया। आफ्टर दिस 2-3 पैराग्राफ यू विल राइट इन द मेन बॉडी, एक आप पॉजिटिव चीजें बताएंगे, एक नेगेटिव चीजें बताएंगे। देखिए पॉजिटिव साइड भी है फ्रीबीज देने का, स्पेशली जैसे फ्री एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन नॉट अवॉइड, वो आपको देना ही देना पड़ेगा टू मेंटेन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये जो फ्री राशन वगैरह दिया जाता है। अदरवाइज जो पुअर पीपुल हैं, बिकॉज इंडिया में इतने सारे पुअर पीपुल हैं। So you can mention. So at that I'm saying you, it is not always bad. It is not always good. So you can mention the pros and cons both. और नेगेटिव क्या है कि स्टेट के एक्सचेकर पे इसका बहुत ज्यादा प्रेशर जाता है, ठीक है, कि स्टेट जो है अगर फ्री बीज देने लगते हैं तो फिर डेवलपमेंट में काम नहीं कर पाते हैं। सो ऑल दीज पॉइंट्स यू कैन मेंशन एंड देन कंक्लूजन शुड बी अ बैलेंस वन। So conclusion में even you can mention the reference of Sri Lankan economy कि to certain extent it is okay, but too much giving freebies is not good. You can give the example as we can see the case of economic crisis in Sri Lanka. So all these things you can mention. Okay. अच्छा, गेमिंग लैपटॉप बांट दिया तो आपको आप दे देंगे वोट। आई होप इट इज क्लियर। सो if this session has helped you guys, so please like this session, share this session, and subscribe to our YT channel. I will take one more 2 sessions so that I can tell you more about points. We can discuss 1 or 2 more letters so that all your points, all your doubts get clear before your examination. But I will definitely suggest you कि if you guys can manage, join descriptive batch. It is going to be really helpful because I'm evaluating your letters and essay. I'm giving you suggestions. What are your mistakes? Everything we are counting. Okay. So thank you, everyone. Please like this session, share this session with others also. Okay. And write one letter. Today your homework will be, मतलब you don't have to post it anywhere. आप personally मुझे send कर सकते हैं, but write one essay on freebies. It is a very very important topic for you. Freebies culture. Okay. So it is very very important. Okay. So thank you everyone. हाँ, आप लोग freebie ही ले लीजिए, लैपटॉप बढ़िया लगता है, मोबाइल बढ़िया लगता है। So use my code Saba if you are interested in purchasing this. So use my code Saba. Okay. So thank you everyone. I'm ending this session. I will take more such sessions. Don't worry. Okay. How to send? I told mail ID to my. Are you there, paid student? So I have shared my mail ID. They basically write all the paid student. They write the. They type the letter. They mail it to me. Okay. So even simultaneously they are practicing typing also, and they are practicing all these things also. Okay. So where will you send? You can join my Telegram channel, Learn English with Saba. So Telegram channel is mentioned here. So join this Telegram channel. I will share the link of my doubt group Akshay, so you can share there also. Okay. Got it clear? Is it clear, Akshay? So now I'm ending this session, guys. Take care. Bye bye.